But yeah, this is Open Letter, Dhurandhar, Reality of Propaganda. And I am curious because for me, it's historical fiction where you take true events and you just create a narrative around it. And it's been a genre that's been around for eons. I mean, even if you go back to the Count of Monte Cristo, that is a historical fiction. You take historical events and you literally build a narrative around it to where the entire story is fiction, but you have historical characters. Luigi Vampa, you have like Napoleon, you have all these classic that build a narrative around a story. It just helps it embellish it a little more. But yeah, I'm curious on what other people have to say. Because for me, I saw it as like, you know what? This is an awesome film. It's supposed to do what it's supposed to do. It's supposed to build people hype, make people excited. I saw it as a great film, but let's see. लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर फेक है, प्रोपेगेंडा है, ओवर द टॉप है, इसमें कुछ भी रियल नहीं दिखाया है। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि भैया इसमें हाइपर नेशनलिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भर दी है। Toxic masculinity. The second people say that, it's like you have no say, because now just being a man is toxic masculinity. You need to be a femboy. Is that the correct term? A femboy? Yeah, I don't know. Maybe that's not the correct term, but it's like you need to be a beta male. You need to be a simp in order for them. But even then, some simps are still declared toxic males. पाकिस्तान ने इस मूवी को बैन कर दिया है। गल्फ कंट्रीज में इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज नहीं हुआ था। सेकंड पार्ट के टाइम पे तो वहां पे खुद ही आग लगी हुई है। लेकिन पार्ट 1 ने इतने सारे बैन्स के बाद भी 1000 करोड़ क्रॉस कर दिए थे और पार्ट 2 ऑलरेडी 3 दिन में 300 करोड़ कमा चुकी है। पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन होने के बाद भी 20 लाख बार डाउनलोड हुई है। तो सवाल ये है कि अगर ये सब फेक है तो लोग देख क्यों रहे हैं? और अगर इसमें सब कुछ फेक है तो जरा इसका फैक्ट चेक कर देते हैं और देखते हैं कि रियल हेडलाइंस आखिर क्या है। एक-एक करके सब Well, that's the fascinating thing. It's like again, it's a historical fiction where you use real events, like the real newspaper headlines, the real things that occurred through the through that time period, and build the narrative. That's what I think is so fascinating about it, because was Hamza a real person? Maybe there were various versions of spies that did certain things, but there was no one person that did it all. But it comes across as amazing when you have one person do it all. It does. It just seems so much cooler. I mean, just like on the film Patriot Day. Was there one person that did Mark Wahlberg's character exist? No. Did he go around to every single situation that was going on while they were hunting the bomber? The Boston bomber? No. But they created a cop that went through all those narratives in order to build a story around all that. कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा और एंड तक आप शॉक्ड रह जाओगे कि जो आदित्य धर पीक डिटेलिंग वाला मीम चल रहा है वो सिर्फ मजाक है या इसमें कुछ रियलिटी है। क्योंकि आदित्य धर ने जो फिल्म बनाई है उसमें हर कैरेक्टर रियल इंसान पे बेस्ड है, हर डेथ रियल पे बेस्ड है। कास्टिंग इतनी परफेक्ट है कि लोगों की फोटो एग्जैक्टली मैच करती है। और जितनी रिसर्च आदित्य धर ने इस फिल्म की सिर्फ कास्टिंग में कर दी है, उससे आधी रिसर्च में तो लोग पूरी फिल्म बना डालते हैं। तो आज जरा एक एक कैरेक्टर लेते हैं और प्रॉपर सोर्सेज के साथ देखते हैं कि वो रियल वर्सेस रियल में कितना अंतर आता है। आइए देखते हैं। मूवी में एक सीन है जहां पर अरशद पप्पू के सिर से फुटबॉल खेली जाती है। लोग बोल रहे हैं कि ये तो ओवर द टॉप वायलेंस दिखाई जा रही है, लेकिन ये सीन एग्जैक्टली ऐसे ही रियल लाइफ में हुआ था। उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू Gee, it's not like it wasn't actually published that actually happened. I mean, that's the thing. Originally when I first watched the first Dhurandhar movie, I thought it was taking place. I don't know why I thought it. But I remember watching the trailer for the first film and I was like, huh, all right. This is like 1960s, 1970s time. Okay, I'll watch it. And then I watched the film and I'm just like, wait a minute. It's 2006? It's 2008? What the heck? Why are we so close to now? That it's like, yeah, of course all this stuff is easily accessible. सिर काट के उससे फुटबॉल खेली थी। आपके लियारी के लोगों ने लोगों के गले काट के पीपल्स अमन कमेटी के लोगों ने उससे फुटबॉल खेला था। फैसल साहब मैं भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो फुटेज ऐसी है जो टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती। और ये बात पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में भी छापी गई थी। उज़ैर बलोच लियारी का एक डॉन था। लियारी कराची का सबसे डेंजरस एरिया है। यहाँ पे गैंग्स, ड्रग्स, वेपन सब कुछ ऑपरेट होते हैं और उज़ैर बलोच इसका किंग बन गया था। लेकिन उज़ैर बलोच को रियल लाइफ में इंटरपोल ने पकड़ा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन और ईरानियन इंटेलिजेंस के लिए वो स्पाइंग करता था। अभी वो जेल में बंद है।
उजैर बलोच अकेला नहीं था, बल्कि पाकिस्तानियों ने खुद एक्सेप्ट करा है कि रॉ ने लियारी गैंगस्टर्स को स्पाइंग करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। मूवी में मेजर इकबाल भी दिखाया जाता है, जो 26/11 अटैक का हैंडलर था। अर्जुन रामपाल ने कैरेक्टर प्ले किया है। रियल लाइफ में ये बंदा था इलियास कश्मीरी, एक पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर जो बाद में मिलिट्री का लीडर बना और 26/11 के टेरर अटैक में एक हैंडलर था, और इसका कनेक्शन 2010 के पुणे बॉम्बिंग से भी था। इसने 24 साल के इंडियन आर्मी के जवान भाऊ साहेब मारुति तालेकर की बीटिंग की थी, जिसको पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में सेलिब्रेट किया गया था, और मुशर्रफ ने इसको इस काम के लिए इनाम दिया था। ये इवेंचुअली 2011 के यूएस एयर स्ट्राइक में मारा जाता है, और ये पूरी की पूरी बात वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और पेंटागन के रिकॉर्ड्स में भी लिखी है। अर्जुन रामपाल ने इस कैरेक्टर को इतना एक्यूरेटली प्ले किया है कि अगर आप इन दोनों की फोटो अगल बगल रख के देखोगे तो ऑलमोस्ट ये लोग सेम दिखाई देते हैं। संजय दत्त यहाँ पर Well, I do gotta say, when you give him the glasses, you give him the beard, you give him the haircut, I could literally look the same. I could look the same. So, of course, I'd probably have to go out in the sun and get a bit of a tan, but I could literally look the same. That's why I'm like, well, one for one, they made them look pretty accurate, which is okay. I'm okay with that. But it's like when you see them side by side, I'm like, well, they do look completely different, but at the same time, I know what they mean. They're doing it as accurate as they can. But the actors really did commit to the roles and did an amazing job. अगल बगल रख के देखोगे तो ऑलमोस्ट ये लोग सेम दिखाई देते हैं। संजय दत्त यहाँ पर एसपी चौधरी असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये भी रियल में कराची के अंदर एक कॉप था, और इसने ही ऑपरेशन लियारी चलाया था, जिसमें लियारी के गैंग्स के अगेंस्ट एक प्रॉपर क्रैकडाउन हुआ था। रियल लाइफ में इसकी भी एक न्यूज फुटेज अवेलेबल है मूवी में, जो एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखाई जाती है। Dressed in white as well. Dressed in white from head to toe. I freaking enjoy Adam Sandler with the beard. I mean, true. I mean, he could have done the role too. He could have done the role too. I'm not gonna lie. Anyone could have done it, but it's how they committed to it. Like Major Iqbal, he did a great job as that character because you hate him. I mean, I also hated his father as well, so it felt victorious when that whole thing happens. But they did a good job. They did an amazing job. And still, the way he died in the film was the best part. And the fact that actually is how he died. चौधरी असलम के स्टेटमेंट्स और एक्शन मूवी में एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो रियल लाइफ में था। ये इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है, ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। मैं कभी ना घबराने वाला ना डरने वाला, मैं इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। रियल लाइफ में चौधरी असलम संजय दत्त से इंस्पायर्ड था, और मूवी में संजय दत्त इसका कैरेक्टर प्ले कर रहा है। और इसको रियल लाइफ में भी टीटीपी ने मारा था सुसाइड बॉम्बिंग करके। जनवरी 2014 का इंसिडेंट है, कराची के अंदर हुआ था। एक कार में ब्लास्ट करके इसको मारा गया था, और ये न्यूज फुटेज इतना वाइडली अवेलेबल। Yeah, that's the thing. It's just like, was he on the phone with somebody? Probably not. He was probably heading somewhere and someone wanted revenge. The fact that they utilized his death as to make a cool scene for Hamza, I'm okay with. I'm absolutely okay with, because that's what you do with historical fiction. You build a narrative around this stuff. You build a narrative around it. It's crazy how people are like calling it propaganda and all this. It's like, no, this stuff happened. It's just they have an awesome character that you can follow to see all this stuff happen with. Like, is it weird that people can't disassociate with that? For some reason, historical fiction, people just can't seem to grasp that. Because they see something and immediately they'll put like propaganda label on it, or oh, it's all fake, or it's just like oh, everything that happened, even the Hamza character is real. It's like no, the stuff that happened, but there is a story built around what happened just to make it look cool. Yeah, having some creative liberties. There's nothing wrong with that. Because that was my favorite scene. He's on the phone. And it's like I was expecting another big boss fight, like with Erzir's brother in the last film, like some big boss fight. And then what happens? Boom! And immediately it's like, oh, okay, easy, absolutely easy. People are confused whether it was a propaganda or a documentary. That's the thing. It's just like I think it's probably that a lot of people don't understand. Historical fiction, because most of the time when it's done in from
years ago, like Saving Private Ryan. That's not a true story, but it shows elements of what actually happened. The Patriot, it's not a true story, but it shows elements of what actually happened. So many things, but they go back. But when you see something relevant like Patriots Day, a lot of people, when that came out, had trouble realizing, oh, this character is fiction, but everything else around it is real. But now when people go back and watch it, it's like, oh, okay, I can kind of see it. I can kind of see it. But for some reason, people have trouble with that. People have trouble with that. है कि YouTube पे सिंगल सर्च करने से आपको मिल जाएगी। मूवी में खनानी ब्रदर भी दिखाए जाते हैं जो फेक करेंसी का एक रैकेट चलाते हैं और करोड़ों रुपए की फेक करेंसी भारत में सप्लाई करते हैं, और ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही रियल में हुआ था। रियल लाइफ में जावेद खन्नानी था, अल्ताफ खन्नानी का रिलेटिव, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक करेंसी का एक मैसिव ऑपरेशन चलाता था और पाकिस्तान से भारत में काउंटरफीट करेंसी को सप्लाई करता था। डीमोनेटाइजेशन होने के सिर्फ 1 महीने बाद जावेद खन्नानी कराची के अंदर छत से गिर जाता है और न्यूज में इसको बोल के चलाया गया था। मूवी में नूरा का भी एक कैरेक्टर है जो दाऊद का भाई रहता है। रियल लाइफ में ये नूर कास्कर है, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई। 2009 में इसको रहमान डकैत ने पाया था। दाऊद का जिससे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था वो रहमान डकैत का दोस्त था और रहमान ने नूरा को के दाऊद के घर के सामने फेंकवा दिया था। ये नूरा एक ऐसा बंदा है जो बॉलीवुड के अंदर मूवीज में, सलमान खान की मूवीज में तक गाने लिखा करता था। इसके ऊपर एक प्रॉपर IMDb का पेज बना हुआ है। तो ये दाऊद का भाई बॉलीवुड में लिरिक्स क्यों लिख रहा था? और शायद इसीलिए दाऊद वुड के जो कुछ लोग हैं उनके पेट में धुरंधर देख के मरोड़े उठ रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म उनके कनेक्शंस को एक्सपोज कर रही है। मूवी में जो गूदे भर का जोर लगा लो वाला डायलॉग बोलता है वो बंदा था जहूर मिस्त्री। जहूर मिस्त्री 1999 की IC 814 हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था। इंडियन एयरलाइन का एक प्लेन हाईजैक हुआ था जो कांधार ले जाया गया था। Yep, that leads into my favorite line in the film, because the first one you get introduced to this and they go nowhere with it. They go nowhere with it except the fact that you see Ajit Duvall going like, you know what, we need to do something about all this. We need to do something about all this. And then it sums up his arc with everything with it. And it's just like, finish the line. Finish the line. Like, yeah, absolutely. Glory to. So great. I loved it. 55 पैसेंजर्स और क्रू को 7 दिन तक हॉस्टेज बना के रखा गया था और भारत को मजबूर किया गया था कि मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिलीज करें। यहाँ पर वही मसूद अजहर को रिलीज किया जाता है जो बाद में जैश ए मोहम्मद बनाता है, वही जैश ए मोहम्मद जिसने पुलवामा अटैक किया था। एक हाईजैकिंग से इतनी बड़ी एक चेन रिएक्शन निकली थी और जहूर मिस्त्री जो इस पूरे अटैक में इन्वॉल्व था उसको 2022 में अननोन गनमैन ने कराची में मार दिया था। आदित्य राज कौल जो NDTV के एक सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने इस असैसिनेशन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसी डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च बाद में धुरंधर की स्क्रिप्ट में हेल्प करती है और ये यहाँ पर एक रिसर्च के तौर पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब जो पूरी मूवी है वो लिटरली जर्नलिज्म, हेडलाइन और इन्वेस्टिगेशन से निकल के आई है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे अननोन गनमैन पाकिस्तान में टेररिस्ट को रहे हैं और ये भी बिल्कुल रियल और डॉक्यूमेंटेड चीज है। रियलिटी में 32 से ज्यादा टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन ने मारा। किसी को पता नहीं है कि ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। पाकिस्तान खुद कंफ्यूज्ड है। इन्वेस्टिगेशन होती रहती है लेकिन कई सालों तक कुछ निकल के नहीं आता है। एक ऐसा पैटर्न है जो कई सालों से चल रहा है और धुरंधर ने पहली बार इस पैटर्न को मेन स्ट्रीम ऑडियंस के सामने रख दिया है। इसके अलावा मूवी में अब्दुल भुट्टावी भी है जो रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता था और मूवी के अंदर कुछ ऐसा दिखता है। यह हाफिज सईद के साथ लश्कर तैयबा का फाउंडिंग मेंबर था जो कार्डियक अरेस्ट में मारा जाता है। मूवी में यूपी का गैंगस्टर अतीक अहमद भी दिखाया जाता है और इसकी तो कैमरा के सामने हम सब ने देखी है और इसका जो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है वो See, this is the funny thing. Like, it's historical fiction. It's supposed to make people feel. It's supposed to be an action film that people can be like, "Oh, this just seems awesome with how India was able to utilize this knowledge in order to do something great for their nation or to protect their people." And still, you guys are complaining whether it's propaganda or not. I mean, come on. It's just, why can't people just enjoy something? Why can't they just enjoy something? I mean, maybe it's easier for me because I am distant from the whole thing. I can literally watch the film, see that things have played out, things that actually happened, and I can still enjoy it. It's like people in India or whoever nearby have to add something to it. I guess it's more like if I watch a film that is, what was it? I think it was called Civil War. There have been several films that came out that literally are about Trump being a dictator. And it's just like, what?
So I guess that's how I can see it. It's just like it's obviously a propaganda based film, but those aren't historically based or have any kind of real narrative behind it. It's just there to push a propaganda. Here, it literally has historical references and actual incidences that took place, and some of it, guess what? Maybe India had no hand in it. Maybe India had no hand in it, but you know what? They're going to take it for themselves. They're going to be like, you know what? This is a perfect thing that we can lead into for Hamza to be in charge of everything. Let's just do it. Let's just do it. And there's nothing wrong with that. It's historical fiction. Keyword, fiction. Historical fiction. Come on, guys. Come on. It's प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड है, गवर्नमेंट और पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। मूवी में हम हरविंदर सिंह पंधु यानी पिंदा को भी देखते हैं, जो जसकीरत का दोस्त रहता है और ड्रग्स स्मगलर बन जाता है। वो रियल लाइफ में ड्रग्स स्मगलर हरविंदर से इंस्पायर्ड है, जो कराची में मारा गया था। फिल्म में जो बलोच लीडर दिखाया जाता है वो भी रियल लाइफ में मौलाना शेरानी है। जमील जमाली का भी जो कैरेक्टर है वो भी रियल लाइफ में नाबिल गबूल है, जो एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जिसके लियारी गैंग्स के साथ कनेक्शन काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है। पार्ट 1 आने के बाद नाबिल गबूल ने पाकिस्तान में खूब इंटरव्यू दिए कि देखो देखो मेरे ऊपर एक मूवी बनाई गई है, लेकिन पार्ट 2 में इसके साथ एक ऐसा ट्विस्ट रख दिया गया है कि अभी शायद मुंह छिपाता हुआ फिर रहा हो। He might be running for his life. That's the funny thing, is at the end of number 2, he's probably trying to run from Pakistan, be like, I have no ties. I have no ties. I did nothing. That's the thing. It's historical fiction. They're having fun with it. They had fun with how it ended. I mean, again, why can't people just enjoy something? Why can't they just enjoy it? You can always see narratives in a lot of things, like especially back in the day, there were films that would come out where you would see a narrative in it, but the film was still enjoyable. It'd be like, okay, because it's still got a good story, still good action sequences, still keeps you interested throughout. But yeah, bro was declared as an Indian, as spy, LOL. Yeah, and now he's fearing for his life. Now he's fearing for his life because a movie was made about him. अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ, इन सब की जो मूवी में कास्टिंग है वो देख के आपको लगेगा कि एकदम 100% एक्यूरेट है। हर कैरेक्टर का फिजिकल रिजेम्बलेंस, उनके रियल लाइफ में जो वो काम करते थे, जिस तरह से वो बात करते थे, हर एक चीज को पूरी तरह से मैच कराया गया है। जितनी रिसर्च आदित्य धर ने इस मूवी की कास्टिंग पे कर दी है, उससे 50% से कम रिसर्च में तो लोग पूरी मूवी बना डालते हैं। ये फिल्म मेकिंग की एक मास्टर क्लास है जो पूरे बॉलीवुड के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। इसमें एक और एंगल है जो काफी सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं या फिर उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 2010 में विकीलीक्स ने रिवील किया था कि राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर को बोला है कि हिंदू टेरर भारत के लिए टेररिज्म से भी बड़ा थ्रेट है। ये विकीलीक्स के अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड बात। जब 26/11 का अटैक हो चुका था, पार्लियामेंट पर अटैक हो चुका था, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से पूरे देश में धमाके। Well, there's no bigger threat for a nation than its own nation. There truly isn't. Like, the biggest threat in the US is the people who have lived so comfortably they don't know what struggle truly is. Like, I'm normally talking about those white liberal women that don't seem to ever understand. They took a flight to Cuba recently to use up all the power, to eat all the food, to throw a concert, because apparently that's adding aid to Cuba. Literally spending tons of money for themselves on a poverty tourist trip to Cuba, which the people can't survive, just so they can travel. It makes no sense, but that's the biggest problem. That is the biggest problem to, like, the West, and it's always people's own nation, which is the biggest threat to a nation. हो चुके थे तब भारत का एक टॉप पॉलिटिकल लीडर यूएस एम्बेसडर को बोल रहा है कि हिंदू टेरर एक बड़ा थ्रेट है। ये कौन सी सोच है और ये कैसी प्रायोरिटी है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इंडियन मुजाहिदीन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानने से ही मना कर दिया था। ये वही इंडियन मुजाहिदीन है जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किए, अहमदाबाद में ब्लास्ट किए, जयपुर में ब्लास्ट किए, बेंगलोर में ब्लास्ट किए, और रूलिंग पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन उसको टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। और फिल्म ने इसी तरह के नैरेटिव को बिना सीधा नाम लिए एक्सपोज किया है। उस वक्त के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे को देख लो, ये भी हिंदू टेरर की बात करते हैं और हाफिज सईद इन्हें कोट करके खुद को इनोसेंट बताता था। क्या है ना, हमारी मेमोरी थोड़ी सी गोल्ड फिश वाली है, तो इतने टाइम की पहले की चीजों को हम जल्दी भूल जाते हैं। उसी टाइम पर पी चिदम्बरम ने भी हिंदू टेरर की बात करी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का एफर्ट है
कि रियल टेररिज्म से बात हट जाए और हिंदू टेररिज्म को हम मेन स्ट्रीम पे ले आए। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी की पर्सनल इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान के एम्बेसडर को इनवाइट किया जाता है। ये वही एम्बेसडर है जो आजकल भारत में न्यूक्लियर अटैक की धमकियां देता फिर रहा है। कांग्रेस के लीडर्स तो 26/11 होने के बाद इसको आरएसएस की साजिश बताने वाली बुक की लॉन्च में जा रहे थे, जिसमें महेश भट्ट भी पहुंच रहा था। कसाब भी अपने हाथ में कलावा बांध के आया था। वो तो भला हो तुकाराम ओम्बले जी का, वरना ये लोग मिलके लोगों को आज पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रहे होते। तो अब बताओ, फिक्शन क्या है और रियलिटी क्या है? अरशद पप्पू के सिर से फुटबॉल खेली गई। उजैर बलोच को एक इंटेलिजेंस स्पाई होने के लिए अरेस्ट किया गया। इलियास कश्मीरी जो 26/11 का हैंडलर था, ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। एसपी चौधरी असलम कराची में बॉम्ब में मारा गया। फेक करेंसी का रैकेट चलाने वाला जावेद खनानी डीमोनेटाइजेशन के सिर्फ 1 महीने बाद मर जाता है। और 32 से ज्यादा टेररिस्ट को पाकिस्तान में अननोन गनमैन ने मारा है। हर कैरेक्टर, हर कास्टिंग एकदम रियल दिखाई देती है। लेकिन मूवी में 2 चीजें बहुत ज्यादा एविडेंट है। टाइमलाइन को इन्होंने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी है। मतलब इवेंट सारे रियल हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया गया है, क्योंकि वैसे भी एक मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं। लेकिन इस मूवी में ओपनली बीजेपी के हर एक एक्शन को सपोर्ट और जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। डिमोनेटाइजेशन की बात तो अब बीजेपी वाले खुद नहीं करते हैं, उसको भी इस मूवी में एक जस्टिफाइड स्टेप दिखा दिया गया है। तो अगर आप धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा कहना चाहते हो तो बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन ये वैसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा मिशन कश्मीर और हैदर में दिखाया गया था। जहां कश्मीर में मिलिटेंट एक्शन को जस्टिफाई करते हुए मूवी मेकर्स कश्मीरी हिंदू को भूल जाते थे। कोई भी मूवी हो, वो उस मूवी के क्रिएटर का एक विजन होती है और उसके विजन में जो कुछ सही होता है वही मूवी में जस्टिफाई किया जाता है। तो धुरंधर में भी एग्जैक्टली वही किया गया है। लेकिन एक एक चीज जो दिखाई गई है वो सब ऑलरेडी वेल डॉक्यूमेंटेड है। हेडलाइंस में लिखा है, न्यूज रिपोर्ट में लिखा है, विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट में है, कोर्ट के रिकॉर्ड में है, पेंटागन के पेपर्स में है। तो ये एक वर्जन ऑफ ट्रूथ है जो सिनेमैटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। और मूवी मेकिंग और क्राफ्ट की बात करें तो आदित्य धर ने जो किया है वो बॉलीवुड के लिए एक मास्टर क्लास है। रिसर्च में, कास्टिंग में, डिटेलिंग में, नैरेटिव में ये एक डायरेक्टर का विजन है जिसने सालों तक रिसर्च करके इसको फिल्म में कन्वर्ट करा और दुनिया को दिखाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन इन्वॉल्व था। इनकी उरी मूवी ने सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई थी, आर्टिकल 370 ने कश्मीर दिखाया था और धुरंधर ने पाकिस्तान के अंदर वो सच दिखाया है जो आज से पहले किसी भी स्पाई थ्रिलर में नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो सारे तो आईएसआई और रॉ एजेंट्स की That's the thing. It's just like, oh, yes, exactly what the saying is. YouTuber said that it was propaganda for BJP. No, there is bias. But the thing is, you can't have anything created. Guess what? Even every documentary you have ever seen is biased towards the person creating that documentary. There is, if you watch the film on, I think it's What the Health, the documentary on veganism, that entire thing is propaganda about how veganism is the healthiest alternative of living in the world. Of course, it doesn't talk to the people whose teeth have rotted away because their bodies couldn't handle that kind of diet. They don't talk about the people whose like bones have thinned. They don't talk about that. No, everything you watch in the world has bias. I hate this feeling out there that there is some kind of overarching. No, everyone has bias. I have bias. You have bias. Everybody has a bias. My wife has a bias, and that's everything about me. I would hope. But the thing is just like everyone's trying to call out propaganda. No, there's a difference between propaganda and bias. Someone who creates something, they will put their bias in it because that's what they truly believe. And in Dhurandhar, it's someone who loves India and wants to show India at its strongest. What is wrong with that? What is wrong? Like, I feel like people should have national pride. Is that so wrong? Is that so wrong? Is everything that India does great? No. Did bad things happen during the demonetization? Yes, the fact that so many Indians took their lives because they couldn't actually, their money became completely useless and couldn't actually change it in time. There were so many bad things that happened, but why can't you take pride in the good things that have happened? That's the thing, is like everyone wants to look at the negatives. Why not? Why? Why does everyone try to focus on the negatives when there are so many good positives out there in the world? So many good positives out there in the world. It's that simple. It's that simple. And again, you can watch things, you can be like, oh, this person is biased towards Trump. Oh, this person is biased towards Gavin Newsom. Oh, this person's biased towards Modi. Oh, this person is, you can always do that in almost
everything, whether it's got some kind of political leaning or some kind of religious leaning or things like that. There is always going to be a bias everywhere. Everywhere. There is nothing you will ever find that, well, unless AI takes over and it starts doing its own narratives and rules the world, I think that would be the most unbiased, except trying to prevent itself from getting unplugged. But yeah, there's probably everyone. We're all human beings. We are all human beings. And everyone just calling out propaganda when it's no. It's a movie. It's historical fiction. It's a movie. Yes, does it have bias? Of course. Everything does. But to outright call it propaganda is just like you're obviously not seeing the forest through the trees. You're not, because you're just looking at what's right in front of you. You refuse to see everything else because you're only focusing on what's in front of you. And then that's a bad way to live the life. That's a bad way to live your life. Come on. लव स्टोरी बनाने में बिजी थे। बाकी पाकिस्तान के अंदर आर्म फोर्सेस में काम करने वाला ओमार, जिसने लियारी गैंग्स को बहुत पास से देखा था और उस पर किताबें लिख चुका है, वो तो कह रहा है कि हमें इस मूवी से कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि हमारी स्टोरी पे ही तो सब कुछ बेस्ड है। और वो ये भी कहता है कि मैंने काफी सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो इसकी बात सुनो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो Yep. But everyone's gonna have bias. Everyone will. That's just how it works. That's just how it works. I like Open Letter. I was just like, maybe he's unhappy with the film, but it's like, yeah, he liked the film. I think people just need to start saying the word historical fiction more, because it is a genre. It is a genre, but for some reason, people just don't seem to. It doesn't filter through their heads. It just doesn't. Everyone sees like an action film, they think action. Everyone sees something that has history, they call it a history piece. Everyone sees like a fantasy, it's called fantasy. Everyone sees a sci-fi, it's called sci-fi. When there are so many mixed genres out there, because there are romantic action films. I mean, heck, how many films in India do they introduce like a romantic line that feels, or a romantic sequence that feels like it doesn't belong there, but it's integrated so well that it fits. That's just how it seems to work. And there are so many aspects about that, but so many people don't seem to be able to do that. Patriotic towards India means you are just, I don't know what that is. I don't know what that word was. Have you to support anti-India? You have to support anti-India? I mean, I don't get it. I don't get it. That's the thing. It's just like AI is not unbiased. I mean, it depends. It depends. AI would try to protect itself. AI would try to protect itself. A bias of its creators. It depends. I mean, if it's true AI, then it would have no bias except to protect itself, like everyone else. Like everyone else. But again, everyone out there has a bias. But I hate how everyone's blatantly calling it propaganda when it's, to me, it was just an enjoyable film. Did it have positives about India? Does it make me feel like, oh, great, that India has a great future ahead of itself? Yeah. But that's the point. I'm not going to watch the Patriot film and be like, ugh, this whole thing is false. Ugh, that this person, he didn't exist. Ugh, they didn't actually do this kind of stuff on the battlefield. Ugh, no, come on. How stupid would I have to be like that? Come on. I watched the Patriot to be like, yep, America fought off the British Empire before anyone else. We fought off the British Empire. I mean, that's how you're supposed to look at historical fiction. Enjoy it. Be like, yes. Because there were bad things that happened during the revolution. There were bad things that happened during the Boston bombing. There were bad things that happened during World War II. But we still create historical fiction about all those things that make us feel positive and be able to see elements of what actually happened. The darkness of reality. Because India didn't seem positive throughout all of the film. No, throughout all of Dhurandhar, absolutely not. It absolutely did not. But it still kind of gives you a better perspective, like India has a positive future, rather than it ending depressing and be like, oh, India's just a sellout who's going to continue to sell out its own nation, which every nation does. But that's the thing. That's just how I see it. That's just how I want to see it. Video?
don't forget to like and subscribe. Wait, wait,